structure of heart, and we'll be doing the last subtopic, which is cardiac cycle. So cardiac cycle is, I think it's new for you. Baki structure of heart to already pata hoga, and you already are aware that your heart has four chambers, two upper one and two lower one. So the upper chambers are on the each side of the heart, and they're called atrium, or sometimes they are known as auricle. The two atria receive blood from the veins. So one of the chamber, the right chamber, receives deoxygenated blood, while your left atrium, it receives oxygenated blood. So the category of blood that they're receiving is different. One of them is oxygenated, other one is deoxygenated. But uske alawa, everything is same. They are receiving the blood, and then the lower chambers are ventricles. They are particularly they're responsible to pump the blood out of ventricles, and in particular right chamber is responsible to pump blood into lungs so that blood could get oxygenated, and then it returns back to left atrium, where it's pumped down to lower ventricle or the left ventricle, and then when left ventricle contracts or when it pumps, so the blood is pumped into aorta as a part of systemic circulation. So then the atrial ventricles, they have valves between them. And now you need to remember that the valves between them are known as atrioventricular valves. The one on the left is the mitral or bicuspid valve. And the other one on the right is tricuspid valve. Okay. Then atrial systole means that both atria contract simultaneously, and then blood flows from the atria into ventricles. Then backflow of blood into veins is prevented by closure of the valves. So valves are present. So in order to prevent the backflow of blood, yeah, flow should have been FLOW and blood flows. ठीक है? So yeah, spelling mistake है, but. Ventricular systole, both ventricles contract. The AV valves are pushed shut by the pressurized blood in the ventricles. The semilunar valves in the aorta and pulmonary artery are pushed open. Blood flows from ventricles into the eight arteries. Ventricular diastole, atria and ventricles relax. The semilunar valves in aorta and pulmonary artery are pushed shut. Blood flows from the veins through the atria and into ventricles. So you now need to remember the difference between AV valves and semilunar valves. So AV valves are present between the atria and between atria and ventricle, while let me show you. एक minute. AV valve नहीं बनी हुई. So they have marked this as tricuspid valve, and in a broader spectrum, these valves, bicuspid and tricuspid, they are known as AV valves, atrioventricular valves. Since they are present between atria and ventricle, we'll call them AV valves. And in particular, you need to remember the right side of the heart has tricuspid, while the left side of the heart has bicuspid valves. Okay? And then in your pulmonary artery, so you can see this is the pulmonary artery, which transports blood from heart to lungs as a part of pulmonary circulation. So in pulmonary valve, we have semilunar valves. Okay? And semilunar valves are present in pulmonary artery, and they're also present in aorta. And they are present there to prevent backflow of blood. Say it. Now, moving towards cardiac cycle. Acha ji, first let's do this. So, this could be a question ki how the heart valves function, and this could be a 4-mark question or a 3-mark question, and you need to remember all the details that are written here. We have discussed briefly, but this picture you can also find in your Mary Jones, and you can study from it as well. But we have already discussed the role or the function of the semilunar valves or the AV valves. Do not get confused between semilunar and AV valves. During atrial systole, meaning when your atria contracts, the pressure of blood is higher in the atrium than in the ventricle. So when atria contracts, atria has a higher blood pressure. And why is that so? So that
blood could flow down to ventricles via AV valve. So AV valve opens and then blood flows from atria to ventricle. Then during ventricular systole, the pressure of the blood is higher in the ventricle than in the atrium, so that blood could move out of the ventricle into pulmonary artery or in aorta, respectively, considering the fact if the blood is going in pulmonary circulation or if it's going in systemic circulation. Okay? The pressure of the blood pushes up against the cusp of the AV valve, pushing it shut. Contraction of the papillary muscles attached to the valve by tendons prevent the AV valve from being forced inside out. And then during ventricular systole, the pressure of the blood forces the semilunar valves open. So when during atrial systole, AV valves open, and during ventricular systole, semilunar valves open. Okay, so you need to remember कि कौन से time पे कौन सा valve is opening. Do not write कि atrial systole में semilunar valves are opening. No, at that time semilunar valves are closed. But if your ventricle contraction is observed, then you'll see that semilunar valves are open and AV valves are pushed shut. Then during ventricular diastole, the pressure of the blood in arteries is higher than in ventricles. So you need to remember this could be a part of your P1s. Here during ventricular diastole, which means that atria and ventricle, both of them are there's just my millisecond in which both of your all four chambers relax. Okay, so that this is that time when ventricular diastole is being observed. The pressure of the blood in the arteries is higher than in the ventricles. The pressure of the blood pushes into the cusp of the semilunar valves, squeezing them shut. So just remember for this question, just remember that during atrial systole, AV valves will open. During ventricular systole, semilunar valves will open, and during ventricular diastole, they'll relax while the pressure in the arteries will be higher than in the ventricles. Okay. And then you need to correlate this graph with whatever we have studied up till now. You need to remember okay, 0.1s, and this is a very repetitive question in P1s where they ask you okay, uh what is the time limit of one cardiac cycle. So one cardiac cycle means कि उसमें atrial systole, ventricular systole, and ventricular diastole, all three of the components could be seen. So one cardiac cycle is of 0.7 seconds, and in some books it's also written 0.8 seconds. But the ideal time for one cardiac cycle is 0.7 seconds. Okay? So you need to remember that 0 till 0.1, or I think it's 0.15, jitna bhi hai ye. This part is showing atrial systole, meaning when your right atrium and when your left atrium contracts, this is that part. Okay? This is your atrial systole. Then this larger elevation of the graph is your ventricular systole. Okay? This is larger. Why? Because the pressure in ventricles is much more than atria, as the blood has to be pumped around the whole body through ventricles, right? So this is exactly why the pressure in ventricles is higher than the pressure in atria. So this is the representation of ventricular systole. And the time limit from I think 0.5 to 0.7 is your ventricular diastole. Okay? So इतने time के लिए the heart is relaxing while it's continuously working for atrial systole, then ventricular systole, then ventricular diastole. Sometimes they ask you to label it. So this is atrial systole. I'll label it as A dot S. Then this is your ventricular systole V dot S. And then this is your ventricular diastole V dot T. Okay? So you need to remember this कि यहाँ पे कौन सी systoles and diastoles are being observed during a cardiac cycle, and cardiac cycle is of 0.7 seconds. Write it somewhere because ये MCQs में काफी पूछते हैं. Now the last part, which is cardiac cycle, okay, how cardiac cycle is initiated. And you are aware of the fact that blood has to pump from atria to ventricle, then to lungs, then again atria, then ventricle, then aorta. We are already aware of the entire cardiac cycle. But we need to understand how it begins. And it begins due to this small patch of muscle which is located in the right atrium wall
This small patch of muscle is known as sinoatrial node, SAN. ठीक है. This is that pacemaker, or this is that small muscle which initiates or which automatically contracts and relaxes all the time. It does not need any nerve impulse to start, so it is said to be myogenic. It means that myogenic literally means that this contraction or relaxation is initiated itself by the muscle. It does not need any nerve impulse. Okay. So it's located in right atrium wall, SAN, and it automatically contracts and relaxes. And this is also known as pacemaker. Okay. The pacemaker's rate can be adjusted by nerves transmitting impulses to the pacemaker from the brain. And now here is the exact cardiac cycle that you need to remember for 4 marks. Okay, as the muscle in the SAN contracts, it produces an electrical excitation wave which sweeps through all of the muscle in the atria of the heart. So SAN contracts and it produces this electrical excitation wave in the entire atria, be it right atrium or be it left atrium. Okay. So as a result of that, this excitation wave makes the muscle in the atrial walls contract. So SAN contracts, it produces electrical excitation wave, then it spreads all across the atria, and then atrial muscles they contract. Then that excitation wave sweeps onwards and reaches another patch of cells. It is known as atrioventricular node. So now comes the other pacemaker, which is known as AVN. It's atrioventricular node. Do not mix it up with atrioventricular valves. Those are something different. This is something different. This is a pacemaker, while those were the valves which prevent the backflow of blood. Okay. This node is the only way in which the electrical impulses can get down to ventricles, because SAN is responsible to create excitation only in atria, while AVN, it is responsible to create excitation wave down to the ventricles. The AVN delays the impulse. So this is a very important step. It delays the impulse for a fraction of a second before it travels down into the ventricles. So there is this pause of just few milliseconds. And why is that so? So that the ventricles could receive the signal to contract after the atria receive the signal. Okay. In order to prevent both atria and ventricle contracting simultaneously, a delay in few milliseconds could be seen, which is produced by AVN. And then the excitation wave moves swiftly down through the septum of the heart along the fibers known as Purkinje tissue. They're also known as Purkinje tissues. Okay? Yeah, they're also known as bundle of His. Bundle of His. It should be written somewhere here, but Purkinje fibers, Purkinje tissue, Purkinje tissue. These are all the names of bundle of His. I'm specifying this because these questions are very tricky, and I'll briefly tell you how they test you on this after we are done with it. चलिए, मुझे बहुत मजे का क्वेश्चन मिला है. ये बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है विद इन द बॉडी. ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के 3 वेज बताएं. मिस 85% ब्लड प्लाज्मा के थ्रू होता है, 5% डिसॉल्व हो जाता है, और बाकी लास्ट वाला नहीं आता. कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है ना, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. 10% वैसे होता है, 5% डायरेक्टली प्लाज्मा में चला जाता है, एंड 85% हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है. ठीक है. ठीक है मिस. अच्छा, आइडेंटिफाई एंजाइम एक्स. ये किसी से आइडेंटिफाई होगा. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे कंबाइन होता है H2CO3 में विद द हेल्प ऑफ कार्बन एनहाइड्रेस. कार्बोनिक एनहाइड्रेस. या और मिन्हा, वाई वाला मॉलिक्यूल आप आइडेंटिफाई कर सकती हो? नहीं नहीं मिस. उस्मान, आप कर सकते हो? वाटर. HbO8 जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो आपकी ऑक्सीजन डिसएसोसिएट हुई है, राइट? और ये जो हाइड्रोजन है ये किसी चीज के साथ कंबाइन हो जाता है. किसके साथ कंबाइन होता है?
हीमोग्लोबिन। तो क्या बनता है? HHB। HHB, हीमोग्लोबिनिक एसिड बन जाता है। हीमोग्लोबिनिक एसिड। ठीक है। अच्छा जी, नाउ हाँ, ये देखिए क्लोराइड शिफ्ट का क्वेश्चन है। स्टेट व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर क्लोराइड आयंस टू एंटर द रेड ब्लड सेल एज द हाइड्रोजन कार्बोनेट आयंस लीव। हमने कल इसे डिस्कस किया था। मैं आपने बताया था कि वो एच आयन ज्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट कर देते हैं। हम्म। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट क्योंकि 85% हाइड्रोजन कार्बोनेट बाहर चला जाता है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, नेगेटिव है। और अंदर क्या बचेगा, हाइड्रोजन के आयंस बचेंगे जो पॉजिटिव वाले हैं। तो अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा हो जाएगी, बाहर नेगेटिविटी ज्यादा लूज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्लोराइड के आयंस जो हैं वो सेम ट्रांसपोर्टर से एंटर होते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल बैलेंस विद इन द रेड ब्लड सेल। ठीक है, मेंटेन इलेक्ट्रिकल बैलेंस। ये हमने कल किया था जब काफी सारे बच्चे नमाज पढ़ने के बाद वापस ही नहीं आए थे। इलेक्ट्रिकल बैलेंस। अच्छा जी। हम्म। ये बात भी हमने कल डिस्कस की थी कि आइडेंटिफाई द एक्वस एनवायरनमेंट लेबल्ड जी दैट सराउंड्स द रिस्पायरिंग सेल। ये देखें, सेल है, सेल के बाहर एक जगह बनी हुई है, इसको अब हम क्या बोलेंगे, ये एक्वस एनवायरनमेंट बना रहा है। टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड, एक्सीलेंट। ठीक है, रिस्पायरेटरी वाला भी हम नहीं कर रहे। अच्छा, एक चीज और कि कार्डियक के क्वेश्चंस गैसियस एक्सचेंज के साथ मिलकर आते हैं, तो अभी गैसियस एक्सचेंज हमने अगले वीक में हम पढ़ेंगे, तो तब देखेंगे। ठीक है, इससे घबराना जाना, अगर इसके क्वेश्चंस आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो। अच्छा जी, टाइप ऑफ ब्लड वेसल, इसको तो जरा जल्दी से आइडेंटिफाई करें। एक सेक्शन दिया हुआ है आपको ब्लड वेसल का, आपने आइडेंटिफाई करना है कि इफ दिस इज एन आर्टरी, इफ दिस इज अ वेन और इफ दिस इज अ कैपिलरी। प्लीज सही आइडेंटिफाई करना, हिंट दी हुई है उन्होंने आपको। इतना मुश्किल क्वेश्चन है, सही से आइडेंटिफाई करना। फौरन जल्दी से आंसर ना देना, सोच समझ के। मिस वेन ये कैपिलरी है, इसमें से मुझे कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि आर्टरी तो पॉसिबल ही नहीं है। आर्टरी तो पॉसिबल मुझे नहीं है, वेन क्यों नहीं? अच्छा, आप लोगों को मैंने 1 UM पे भी मार्क करके दिया, फिर भी आप लोगों ने गलत बोल दिया, कैपिलरी है ये। वेन जो है ना, सही है, आप लोगों ने सही वो कहा कि वेन का ल्यूमेन आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये इरेगुलर नहीं है ना। और ये 1 UM का जहां पे भी आपको वर्ड नजर आ जाए ना मैग्निफिकेशन में, उसका ऑटोमेटिकली मतलब होता है कि वो कैपिलरी है। इसके मेरे पास रीजन हैं कि आपके जो कैपिलरी होती है ना वो बहुत छोटी होती है, उसका 1 UM जो है ना वो बहुत छोटा यूनिट है। तो यूएम सिर्फ यूज ही कैपिलरी के लिए हो सकता है, वेन के लिए तो यूज ही नहीं कर सकते। तो ऑल्सो एक और बात कि ये इतनी थिन है कि सिर्फ इसमें ये जो इतनी इसकी ये जो इतना थिन सेक्शन है ना, ये सिर्फ कैपिलरी का ही हो सकता है। कि ये 1 सेल थिक होती है, कैपिलरी इटसेल्फ इज जस्ट 1 सेल थिक। एंड 1 UM है क्योंकि इतनी इतनी छोटी कैलिब्रेशन और किसी ब्लड वेसल के लिए हो नहीं सकती। तो सिंगल सेल्ड वॉल है, थिन वॉल है, और दूसरा ये कि ये इसका जो ल्यूमेन है वो बहुत छोटा है, 1 UM है, तो इसलिए मैंने इसको आइडेंटिफाई करा है एज कैपिलरी। ठीक है, हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते आएगी चीजें। अच्छा जी, अभी ये तो अभी हमने करा है, तो इतनी जल्दी आपको नहीं हो पाएगा। हम्म। State which label represents the valve that prevents the backflow of blood from aorta into the ventricle. Please सही से मुझे लेबलिंग बताना, जज्बाती होके गलत ना बताना। एस। एस, एक्सीलेंट। एस इसलिए है बिकॉज अयोटा और इनटू वेंट्रिकल में सेमिलुनर वाल्व आएगी, राइट। तो जो सेमिलुनर वाल्व है वो आपने देखा कि यहाँ ये वाला आपका जो चेम्बर था वेंट्रिकल का, लेफ्ट चेम्बर,
यहाँ पर ये कहाँ पर प्रोपगेट कर रहा है, तो ये इधर जाएगी किसकी, ये वाला जो है ये पल्मोनरी के लिए है, यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए पल्मोनरी वेन दी हुई है, लेकिन इस वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रहा है ये वाला एस वाली जंक्शन विच इज योर सेमिलुनर वेल्व. Name the blood vessel that carries oxygenated blood from lungs to the heart and state which label represents this blood vessel. मिस पल्मोनरी वेन. Pulmonary vein. Excellent. और इसकी लेबलिंग कहाँ पर है? Pulmonary vein कहाँ पर है? आर क्यों है क्या? यू आर आर है. यस आर आर है. हाँ, यू तो हो ही नहीं सकती. यू तो ये तो पता नहीं आपने किस चीज को लेबल कर दिया. क्यों 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 मैं क्यों पे चला गया? ओ क्यू तो बहुत ऊपर चले गए आप, तो वहां चले गए पल्मोनरी आर्टरी की तरफ चले गए आप. ये आर्टरी होती है, तो पहले आर्टरी होती है ना, फिर वेन होती है. ये लंग से यहाँ पर एंटर करता है ब्लड इस वाले चेम्बर में, यानी आपका लेफ्ट एट्रियम में एंटर करने के लिए वो आर से एंटर होगा. ठीक है. स्टेट प्रिसाइजली वेयर द एस ए एन नोड इज लोकेटेड. सोचना पड़ रहा है, अभी तो पढ़ा है हमने. राइट एट्रियम. राइट एट्रियम. एक्सेलेंट. चलें उस्मान, आप सी का भी आंसर ही आप दे दें. मिस ये लेफ्ट नहीं, वेंट्रिकल्स के अंदर ये जो वेव होती है वो एक्साइट होती है. ठीक है, काफी हद तक सही है कि इट बेसिकली अलाउज योर वेंट्रिकल्स टू fill and it allows atria to contract before ventricle, it allows ventricles to fill, और दूसरा क्या कि it passes the ये electrical excitation wave down to Purkinje tissue. ठीक है. इसके वैसे तो टू लिखने थे बट टू लिखने थे इसके रीजन, बट मैंने ज्यादा बता दिए कि it passes down the electrical conduction to bundle of his या Purkinje tissue, जो भी लिखना चाहो एक ही बात है. और दूसरा ये कि इट अलाउज दी atria to contract before ventricles. One passes to bundle of his, allows atria to contract before ventricle. Atria to contract before. अच्छा जी, अब लास्ट वाला एक क्वेश्चन देख लें, फिर उसके बाद यू कैन टेक योर लीव. Explain why the wall of left ventricle in the heart is thicker than the wall of the right ventricle. ये तो बहुत आसान सा है, ओ लेवल से करते आ रहे हैं हम लोग. प्रेशर के लिए, क्योंकि पंप करना होता है. उसने पंप करना होता है इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, और सिस्टमिक सर्कुलेशन राउंड टू द होल बॉडी ब्लड को लेके जा रही होती है. इस वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल का थिकर होना जरूरी है, बिकॉज उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है. ठीक है. अच्छा, अब ये बताएं कि अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बिकॉज अब नेक्स्ट सैटरडे की जो क्लास होगी उसमें फिर हम सिर्फ पास पेपर्स करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड मैमल्स के.